हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शो ट्यूटोरियल। हम डीबीटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऑफ द ईयर 2023 एंड दिस इज द पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज। So before we start, subscribe to the channel and press the bell icon to get notified whenever the video is out. This is absolutely free from your side, but this will help us grow. The first question for today is the match the following, right? So we are seeing हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, एक बेसिक इंफॉर्मेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज द लिस्ट वन इज अबाउट बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स एंड लिस्ट टू इज द पॉपुलर एप्लीकेशन, राइट। नाउ जो डी ऑप्शन है दैट इज व्हाट प्रोबायोटिक कल्चर्स। ओके, अभी प्रोबायोटिक कल्चर्स क्या होता है हमें पता है, दैट इज क्लास नोन एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, बट दिस किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, राइट। हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, बट इसके साथ साथ जो अच्छे वाले बैक्टीरिया है वो भी किल हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स के साथ साथ और एक होता है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का काम क्या होता है, रिटेन गुड बैक्टीरिया। ओके, जब हमें कुछ ऐसा इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है लाइक डायरिया एक्सेट्रा, so it is advised that to eat curd, right? Curd. So why this is advised? Because curd is a good source of probiotic. Okay, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया है specifically intestinal, that has to be retained. Okay, also in the summer days it is advised to eat the curd, right? So this is one example. Now probiotic culture जो ऑप्शन डी है इसका आंसर क्या होगा? सी द ऑप्शन 3, लैक्टोज डाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंटेस्टाइनल पैथोजन। ओके, जो दूसरे ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट्स, ये नहीं होगा। प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस फूड, ये भी नहीं। गम्स एंड थिकनर्स, कल्चर विस्कोसिटी स्टेबिलाइजर्स, ये भी नहीं। तो जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज वेरी मच सुटेबल, लैक्टोज डाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंटेस्टाइनल पैथोजन। मतलब जो इंटेस्टाइनल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है उसको कंट्रोल करना, राइट। वी कैन कंट्रोल दैट बाय इनटेक ऑफ प्रोबायोटिक। ओके, जिनको वीकनेस होता है उनको भी प्रोबायोटिक देते हैं, राइट, टू रिटेन दिस। तो D3 इज ओनली इन ऑप्शन 1, सी। इफ D3 इज करेक्ट द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ओके, ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं स्टडी एंड द रियल लाइफ एग्जांपल्स, राइट। वी नो दिस थिंग फ्रॉम बिफोर, राइट। अभी लेट्स टेक अदर ऑप्शन। अगर D3 करेक्ट है तो C4 होगा। व्हाट इज C? पॉलीसैकेराइड मीन्स शुगर्स, शुगर्स का 4। हाउ? गम्स एंड थिकनर्स, राइट। गम्स एंड थिकनर्स में होते हैं कल्चर विस्कोसिटी स्टेबिलाइजर्स। ओके, so this is polysaccharide का application. Then B1, what is B? Superoxide dismutase. Superoxide dismutase is antioxidant, right? Oxide है, so that will be used as antioxidant. And जो A है निसिन, that is preservation of various foods. Okay, so you can remember this as well for next. अगर फिर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो which one of the following is not considered as secondary messenger? So this is from cell signaling. Okay, CMP secondary messenger है, कैल्शियम 2+ secondary messenger है, IP3 secondary messenger है, right? CMP and ATP, जो ATP है उसी से CMP बनता है। So how this is a secondary messenger? These are two opposite
statement options, right? So ATP will be our answer. ATP is not a secondary messenger. So other options है CMP, calcium, IP3 ये secondary messengers है. Next question again match the following. Match the following is very easy to solve actually. Okay, from one option also we can solve the whole question. Right. So this is match one again least one with least two. Least one में protein है, least two में उसका function. Now this is molecular biology. DNA replication हमने देखा है. Okay, molecular biology we have discussed in detail. Right. You can refer DNA gyrase जो D है. This is topoisomerase. We know ना in prokaryotes. तो ये क्या होगा? Relieves torsion strength generated by DNA unwinding. Okay, correct है. So D4 again this is in option 1 only. So option 1 correct. Right, D4. DNAG this is primer. Synthesis of primer. Okay, primase we call, right? DNAG primase. DNAB is a helicase, unwinds DNA, right? And DNA is a initiator basically. Recognizes phoric sequence, origin of replication, opens duplex at specific sites in origin. So from the one option only we can find the answer. Intrinsic apoptotic pathway is primarily regulated by apoptotic pathway intrinsic mitochondria, very easy, right? Mitochondria. What are proto-oncogenes? Okay, proto-oncogene. Let's see the option. They are type of tumor suppressor gene. कुछ भी wrong. Tumor suppress करते हैं नहीं. This is cancer causing basically, not suppressing. They stall cancer progression. No. Stall means stop. Cancer progression करते हैं. It does not stall. They can become oncogene. Yes. Correct. Oncogenes में convert हो जाते हैं. Proto-oncogene. Next option. They have no relation with cancer progression. कुछ भी. Okay. Now I will give you some information about this proto-oncogene. See, there are two types of gene. Okay, I will write here. It will be easy. Cancer. Two types of genes are there. Oncogene and tumor suppressor gene. इससे भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं एनी एग्जाम इट में भी. As we can see from this question, oncogenes जो बनते हैं that is from proto-oncogene. प्रोटो-ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन्स बनेंगे. तो बेसिकली दिस ऑन्कोजीन्स का क्या होता है? गेन ऑफ फंक्शन. गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन से कैंसर होगा. गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन. एंड जो ट्यूमर सप्रेसर है, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड माय नेम ओनली. ट्यूमर को सप्रेस करेंगे. अगर इनका लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो कैंसर कॉज करेंगे. राइट. मेन फंक्शन इज सप्रेसर ऑफ ट्यूमर. बट इफ दिस लॉस ऑफ फंक्शन हैपेंस then it will result in, okay, very important. Following are certain statements regarding gibberellic acid signal transduction in Arabidopsis plant. DELA is negative regulator of growth. Okay, see correct statements हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट. So this is correct.
GA is not required for the interaction of DELA with GID1 protein. See, not required for interaction of DELA with GID1. इंटरएक्शन के लिए GA नॉट रिक्वायर्ड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. डेला और GID1 तो रिसेप्टर है, इंटरएक्शन चाहिए, राइट. इंटरएक्शन के लिए जिबरेलिक एसिड वी वांट. ओके, so B is wrong and see the option. अगर B wrong है तो 1 भी wrong होगा, 2 भी wrong होगा, 4 भी wrong होगा. C will be answer. See, next option only confirms GID is a receptor of GA, right. रिसेप्टर है तो GA चाहिए, इंटरएक्शन होना है तो. डेला is ubiquitinated only after GID1 perceives GA. See, GID1 GA से जब इंटरैक्ट करेगा तभी यूबिक्विटिनेशन होगा एंड बाइंड्स टू डेला. करेक्ट है. प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन ऑफ डेला इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. नेगेटिव रेगुलेटर है, उसका डिग्रेडेशन होना चाहिए बाय द प्रोटियोसोम. तो यस, करेक्ट है. सिंगल ऑप्शन से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं. द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन एंटीबॉडीज इज फॉर्म प्राइमरीली बाय. वेरी इजी. जो वाई शेप स्ट्रक्चर है, राइट, you know this is the antigen binding site. Okay, this is the antigen binding site. So this is formed by hypervariable region of both H and L chains. First option ही correct है. Next option H chain only, L chains only. Constant region no. Hypervariable region से form होते हैं of both H and L chains. Which of the following processes turn on and turn off alpha subunit of heterotrimeric G protein? Again cell signaling से क्वेश्चन है. Binding to GDP, exchange of bound GDP with GTP. Okay, on and off कब होगा, right? G protein. Okay, so we know G alpha when it is bind to GTP is active. And इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या होगा, GDP, this will be inactive. We have to search this option. Binding to GDP is wrong. Binding to GTP, yes, ये तो करेक्ट है. Exchange of bound GTP with GDP, क्या एक्सचेंज होता है? नहीं. हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस. बाइंडिंग ऑफ GTP, हाइड्रोलिसिस ऑफ बाउंड GTP, yes. Option 3 is correct. Why 2 is wrong? Because यहाँ पे दिया है GTP is exchange with GDP. No. Okay, see, GTP से GDP होना, this is hydrolysis, right? हाइड्रोलिसिस से GTP से GDP plus PI and GDP से जब GTP होता है that is exchange. Okay, exchange होगा, GDP से GTP करना है. Binding of GDP, phosphorylation of bound GDP, no. Okay, got it. Rec A protein is involved in Rec A, molecular biology, recombination, right? Rec stand for recombination only. Okay, so recombination is the antimalarial drug such as primaquine is believed to act by causing oxidative stress to the parasite. Okay, very important. This drug is not suitable for treatment in individuals having deficiency in. So this is also a direct question basically, but ये concept है important है.
और ऐसे कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन से ही सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव added this question, right? See, what is the question? So Primaquine is a anti-malarial drug, okay, which will be given against the malaria, right? इसका जो फंक्शन है दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ये काम करता है, okay, to the parasite. Now this drug is not suitable for some individual, right, having deficiency in G6PD, okay, glucose 6 phosphate dehydrogenase. ओके, सो ये एंजाइम है G6PD, एक्सोकाइनेज से फॉस्फोराइलेशन करेगा, राइट. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज भी फॉस्फोराइलेशन. हीमोग्लोबिन का फंक्शन तो हमें पता है. G6PD dehydrogenase, बेसिकली दिस इज इन्वॉल्वड इन, यू कैन से, रिडॉक्स रिएक्शन, राइट. तो इससे इसका रिलेशन है, एंड दिस यू नीड टू रिमेंबर because this question can be asked in various exams also, right? This is a direct information you have to remember. So this was the last question for today. That's it for this video. I hope this video helps you. If you find it video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.